नमस्कार, आप सबका स्वागत है रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की इस खास पहल में। एक बार फिर रीजनल साइंस सेंटर भोपाल एक नए प्रोग्राम को लेके आपके बीच में आया है। आज जैसे कि आप सब जानते हैं, आज से कल हम खास 2 दिन हमने बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐसी महान शख्सियत को डेडिकेट किए हैं जिनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। एक भारत के जाने-माने वैज्ञानिक जिन्होंने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में, खासकर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सफलता दिलाई और वो कैसे उदाहरण के रूप में पूरे भारत के सामने प्रस्तुत हुए। उस दौरान मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश राज के दौरान कि उन्होंने केमिकल साइंसेस को जिस स्केल पे पहुंचाया भारत में, वो काबिल तारीफ है और हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनकी इस जयंती जो 2 अगस्त को हम मना रहे हैं, 164वीं जयंती, उसके अवसर पर रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स की एक यूनिट है भोपाल मध्य प्रदेश में, वर्तमान में इकलौता विज्ञान केंद्र है, जो अपने इस लक्ष्य में कई प्रोग्राम आप तक लेके आता है। और मुझे बड़ी खुशी है सभी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए, उनके प्राचार्य और खासकर विद्यार्थियों के लिए कि वो हमारे इन कार्यक्रमों में जुड़ते हैं। आप सबके शिक्षक, आपके माता-पिता, आपके टीचर्स के साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब की सपोर्ट से साइंस सेंटर एक बेहतर फैमिली के रूप में, एक एक्सटेंशन के रूप में आपसे जुड़ता है और आप एक नया अनुभव यहाँ से अर्जित करते हैं। तो आज बड़ा खास दिन है। आज इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ आइसर भोपाल, जो कि एक इंट्रोडक्शन का मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी हम ब्रीफली बताना चाहेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च जो है भोपाल, ये पहले के 5 आइसर भारत सरकार ने जब खोले थे नेशनल इम्पोर्टेंस के, उसमें से एक है और बहुत प्रेस्टिजियस रिसर्च पे काम होता है और एकेडमिक स्टडीज़ में बच्चे वहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्सेज़, मास्टर्स भी और अंडरग्रेड कोर्स भी करते हैं। उनके डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से हमारे बीच आज प्रोफेसर पॉल सर हैं। प्रोफेसर अमित पॉल बहुत केमिकल साइंसेज की फील्ड में उनकी बहुत लंबी एक अनुभव के साथ-साथ अच्छी रिसर्च है। रॉयल और वो केमिकल सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं और खासकर प्रायोगिक विज्ञान में उनकी एक जो विचारधारा है कि विज्ञान को जितना प्रायोगिक करें हम, उतना वो अनुभव को बेहतर करती है और उसी अनुभव और उसी लक्ष्य के जब बात हमारे संस्थान से उनकी हुई, तो हम लोगों को लगा ये कॉमन इंटरेस्ट है और हमें उनकी कमाल के एक्सपेरिमेंट को, एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहिए। उस मिशन में इस प्रोग्राम को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि सर पहले आप सबसे मुखातिब होंगे और वो बात करेंगे अपनी सब्जेक्ट के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में भी बताएँगे पॉल सर कि केमिस्ट्री में कैसा इंटरेस्ट पैदा हुआ। क्योंकि हम बंगाल केमिकल्स की जब बात करते हैं, भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी जो जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने यानी रॉय सर ने एस्टेब्लिश की थी और साइंस फॉर सोसाइटी का जो एक भारत को एक अजीब नहीं, बहुत ही ऊर्जावान लक्ष्य दिया था कि हम कर सकते हैं। उस कर सकते हैं और हमने करके दिखाया, ऐसे प्रतिभावान वैज्ञानिक से हमें सीख मिलती है। तो जो आज हमारी ऑडियंस में है या जो आज हमें ऑनलाइन हमारी यूट्यूब चैनल और हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स यानी एनसीएसएम के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से अगर आप देख रहे हैं भारत में, तो आप सबका स्वागत करते हैं और लेट अस सेलिब्रेट द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। हमने नाम भी दिया है कमाल का, रसायन विज्ञान की किरण, खोज, प्रयोग और प्रेरणा। और मैं पॉल सर को मंच पे बुलाना चाहूँगा ताकि हम आपको सर सुनने के लिए बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपके जस्ट स्पीच के बाद जो एक डेमोंस्ट्रेशंस हैं आइसर भोपाल की टीम की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के ही 2 स्कॉलर्स हैं, जो पॉल सर के ही खुद डिपार्टमेंट उनके साथ काम करते हैं। एक हैं पारुल जी हैं और दूसरा स्वीटी जी हैं। वो हमारे आज के इस स्कूल और कॉलेज की यूथ के लिए एक रिसर्चर्स भी एक डिसेमिनेट करेंगे वो एनर्जी एंड वाइब्स की साइंस करने का कितना कमाल होता है, कितना आनंद आता है उस केमिकल एक्सपेरिमेंट्स को। तो पॉल सर बिना समय गँवाए हुए एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं, हमारी पूरी काउंसिल की परिवार की ओर से, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और हम सब की बिहाफ से एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करते हैं। हम आज केमिकल साइंस में आपको पता है केमिस्ट्री चाहे इंसानों के बीच में हो या रसायनों के बीच में हो, बहुत ज़रूरी है। तो उस केमिकल साइंस के नाम पर प्रफुल्ल चंद्र रे सर के नाम पर और साइंस भारत के महान मनीषी वैज्ञानिकों की तरफ से हम सबका स्वागत करते हैं हमारे प्रांगण में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी हम अब नेक्स्ट तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे बोला गया कि हिंदी में बोलने के लिए थोड़ा भी ज़्यादा। तो हिंदी मेरा थोड़ा वीक है, फिर भी ट्राई करता हूँ।
तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री IISER भोपाल से हूँ और कल आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे का बर्थडे है। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे comes from the same state from where I came. So as you know that uh, Acharya Prafulla Chandra Ray and Jagadish Chandra Bose were probably the pillars of science during the British rule, and they were part of Bengal Renaissance, and they were the pillars of the science. And also Acharya Prafulla Chandra Ray was a staunch nationalist. He uh, not only did chemistry, so basically he taught most of the time in the Presidency College, taught chemistry, and he was also realized a lot of कि क्या करना चाहिए अ, देश को आगे बढ़ाने के लिए। उसका जो सोच था, इस सोच से उसने बंगाल केमिकल्स का शुरुआत किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ उसने रियलाइज ये किया था कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना नहीं, केमिस्ट्री को यूज भी करना है। तो ये उनका सोच था। एंड इवन so he was staunch nationalist. Even in the presidency college, he was involved in making help students to make bombs also, so that they can fight against the British. So it was really he was a really inspirational figure. And I am in the presidency college. Actually, I have seen the chemicals which he used also. So they have all stored all the chemicals in a room, and I had the good luck to see all those chemicals in that room. And another figure, Jagadish Chandra Bose, who is a physicist, uh, is an inspiration for me also. So with this, just want to say that, so मुझे बोला गया कि थोड़ा मेरा जर्नी के बारे में बोलने के लिए। तो एंड देयर आर स्टूडेंट, अदर पीपल आर सेइंग कि केमिस्ट्री में लोगों का एक डर है। तो लोग मतलब फिजिक्स की तरफ भी जाते हैं, मैथमेटिक्स की तरफ भी जाते हैं, बट केमिस्ट्री सॉर्ट ऑफ सेंट्रल साइंस है। और केमिस्ट्री की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो मैं थोड़ा एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेरे जर्नी के बारे में कि chemistry, hardcore chemistry sort of in our time started in class 11. And so what happened is that, in my case also in class 11, I was so poor in chemistry that I got almost the lowest marks in the class, in class 11 to 12 exam. And then I was really afraid, and I was just counting the days when I will get rid of the chemistry. Uh, तो उसके बाद basically I got a good teacher. And so in next exam, actually in 6 months, next exam, from the lowest marks, I got the highest marks in chemistry. So what was the problem? Just I want to tell कि uh, जैसे कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय is an inorganic chemist. So inorganic chemistry, what I found in my case, कि inorganic chemistry is the biggest challenge, and the teaching has little bit of problem in that. तो हमें बेसिकली पीरियोडिक टेबल सिखाया नहीं जाता है ठीक ठाक करके। तो क्या होता है कि जो रिएक्शंस होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये मेमोराइज करना होता है। ओके, बट इट्स एक्चुअली यू कैन प्रेडिक्ट द रिएक्शंस। क्या होता है कि रिएक्शंस अल्टीमेटली, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में जाता है, राइट? तो और इस वजह से बेसिकली हम लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है मेटल्स का। ओके, और मेटल्स का या एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। और जो चीज एक होता है वो होता है कि यू नो जब इफ आई टेक अ एटम व्हिच इज इन द फर्स्ट रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उससे इलेक्ट्रॉन खींच के निकालना या ऐड करना टाफर होता है। जब एटम बड़ा हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना और डालना बहुत आसान होता है। ओके, सो सो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के नीचे आ जाएंगे तो उससे या तो उस एटम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। जब हम पीरियोडिक टेबल के ऊपर रहते हैं तो वो टफर हो जाता है, राइट? और हार्श कंडीशन देने पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, माइल्ड कंडीशन देने से
कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा, right? So this is the primary concept which my teacher taught me initially. That, you know, if I take a nitrogen atom, I cannot really remove electrons so easily. But if I go to come down on phosphorus, I can easily remove the electrons or add electrons, and I can change the oxidation state much more easily. So this is the basic which he taught, and then on my own I started learning inorganic chemistry. He said, you predict, if you are wrong, then think about it, why you are wrong. So that is the approach which I took, and within few months I started falling in love in chemistry. Okay, so and obviously physical chemistry is much more closer to physics, so there is not much challenge in that. If you are good in physics, you have to be little bit good in mathematics. And organic chemistry is again it is also about the electrons addition and ये बट क्या होता है कि उसमें भी मैकेनिस्टिक थोड़ा मतलब इंडक्टिव इफेक्ट एंड ये सब में थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा. ओके, तो इट्स नॉट रियली दैट टफ टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री. तो आज हम दो एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे, बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट्स. मेरा स्टूडेंट पारुल अग्रवाल एंड स्वीटी, they will try to demonstrate these two experiments. So let's get start. So can we move to next slide? Okay. So we'll show so बहुत I will try to explain things very in a light language. तो हम लोग थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में आप लोग सुना ही होंगे, तो कि हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में lot of things are going on. So we have a small experiments to demonstrate hydrogen evolution. तो हाइड्रोजन एक fuel के तरह यूज किया जा सकता है, which is basically lot of talk is going on. आप लोग देखे होंगे कि हाइड्रोजन लेके बहुत सारा एड भी चल रहा है ऑलरेडी. हाँ, तो हाइड्रोजन इज द नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड. इट्स लाइटेस्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बेसिकली H2 है, द लाइटेस्ट मॉलिक्यूल. Now it is colorless, order, it doesn't have any order. And also it is a basically when it is burned, it will generate, it is one of the clean fuel. That is why people are talking about. Okay, so can we just press next? Yeah, so now generation of hydrogen, that is what we will also try to little bit of demonstrate, we'll try to demonstrate. um, तो जैसे कि बोला है कि हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं है, बट हियर व्हाट वी आर राइटिंग कि देयर आर लाइक ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, ग्रे हाइड्रोजन. नाउ आई गेस I am contradicting myself what I have just said, right? Then we have blue hydrogen, then we have green hydrogen. Okay, what are they? Hydrogen का कलर नहीं होगा ultimately. So that is the point. So black, brown, gray hydrogen is basically we can generate hydrogen from natural gas burning. When we are burning the natural gas burning, then we can generate the hydrogen, and we can use that hydrogen as a fuel. But in that case, क्या हो रहा है कि carbon dioxide generate हो रहा है. Okay, so this color is based on generation of carbon dioxide. So as you know कि the main concern is that कि हमारे environment में जैसे कि हम लोग fossil fuel भी burn कर रहे हैं, तो we are generating lot of carbon dioxide. Okay, so this carbon dioxide is harmful, and it is increasing the global temperature. So we have to get rid of this carbon dioxide. तो अगर हम हाइड्रोजन जब जनरेट कर रहे हैं, तब अगर CO2 जनरेट हो रहा है, तो उसको बोला जाता है कि ब्लैक, ब्राउन और ग्रे हाइड्रोजन. Okay, so this color just to represent that it is not a good way of producing hydrogen. Okay, clear everyone? So next is blue hydrogen. Blue hydrogen is basically similarly when we burn कर रहे हैं natural gas को, so we can generate hydrogen. Okay, but in that case, what we are doing is we can do is that the generated carbon dioxide we can capture it in some chemical way. So this is little bit of cleaner way compared to the first one which I have described. Okay, so this is called blue hydrogen.
Okay, and then there are third category जिसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं. ग्रीन ऑब्वियसली अगेन हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं है. ग्रीन मीन्स बेसिकली एज वी रिप्रेजेंट द कलर, इट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट वी आर नॉट generating CO2. So in that sense, we are saying it green hydrogen. Okay, clear? So electrolysis is one of the greenest way of generating hydrogen. Okay, or we can use the solar power or wind power to generate hydrogen. So this will be like the green hydrogen. Okay. Okay. So so that is the basic purpose. We have just demonstrating small experiment that through electrolysis we can generate hydrogen. So that is one of the experiments which I'll try to demonstrate. Okay, next slide. So usually, when we burn the natural gas, we are generating CO2. So what we can do is that we can split water. Water has hydrogen and oxygen. So as you can see here, we can split. If we split water, then we can generate hydrogen and oxygen. So in acidic solution, the first reaction which we are showing, um, that a cathodic in cathode actually there are two electrodes which we will use. One is called cathode, another is anode. So on the cathode, the proton reduction will happen. Water will basically break, and it creates like H plus ions. So that H plus ions will go to cathode, and that will be reduced and generating the hydrogen. Okay, and so this hydrogen we can store it. And on the so as we are saying that in I was just as I starting में बोला था कि basically कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है, right? So this is the chemistry. So it has to be balanced, right? So basically the cathode में we have the proton reduction is happening. So anode, the other electrode where the oxidation will takes place. Okay, so in one electrode, if there is a reduction taking place, the other electrode there must be oxidation taking place. So usually in this case on the anode, water oxidation will takes place. The second reaction which we are showing. So that is basically will lead to oxygen production. Clear, everyone? So one one electrode will produce hydrogen, the other electrode will produce oxygen. Okay. So now this electrode, this hydrogen can be stored and can be transported. And if we put it in a car, say for example, then what in the car we will have fuel cell. So that fuel cell, what it will do is that hydrogen doesn't really exist in the environment. That is the problem because it is the lightest element. So so it doesn't exist in the environment, but we have a lot of oxygen in the environment, right? So the card will actually capture the oxygen from the air, and our card will have a cylinder having the hydrogen. So from the air it will capture the oxygen, and it will have the hydrogen in the cylinder. So then it will have a fuel cell where the hydrogen and the oxygen will react and will produce only the byproduct water. Okay, so that is basically in this way. Now we are like when we are running the car, lot of CO2 is emitting, but when we will move to this technology, then from the car only water will come out, right? So this is like then that will basically hopefully will not to global warming. So that is the ultimate purpose towards which we are looking at the future. Okay, clear? So now just want to can we click one? Just on this yeah. So now the experiment which we will be doing, we'll just show it in a beaker, but in actual cell where the hydrogen will be produced, if we want to transport it, the two part of the cell should be divided by a membrane. Okay, now why we need a membrane which we don't have here in the experiment? In our experiment membrane is needed because दोनों इलेक्ट्रोड में एक में हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, एक में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है. अगर हम दोनों को सेपरेट नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, राइट?
But in our experiment here, we don't really have the membrane. We'll just try to show ki, like, both the electrodes may gas is evolving, right? So that is the thing. But if we really have to store, then we have to divide the two part by a membrane so that the two gases don't mix with each other. Okay, clear? मैं समझा पाया कि this will be the first experiment. Okay, next slide. So this will be the setup. So we'll just put like two electrodes. We'll have a graphite electrode and a cathode. We basically the one of the research which we are doing is basically development of the catalyst so that I mean, we can apply any potentials to carry out these reactions, but one of the objective of our research is that to reduce the power requirement also. So we are trying to develop catalysts so that we can you generate the hydrogen at a lower power requirement. So for that we develop the catalyst and coat the electrodes on with this catalyst to try to understand how much power requirement we are lowering. So this is sort of part of research. So here in our cell we will not have the membrane. In 0.5 molar sulfuric acid, we'll just apply the potential and we'll try to show that on cathode we are producing hydrogen and in anode we will produce oxygen. And now both are colorless gases. From this experiment, obviously you can ask the question कि पता कैसे चले कि कौन सा hydrogen है कौन सा oxygen है. Currently you have to trust me. But obviously we have chemical techniques gas chromatography which can identify which gas is coming out. So that is not a very difficult job also. Okay. Uh, so this will be the one experiment and another experiment which will be showing that is nylon synthesis. Okay. So next slide. So just showing like this is the one of the catalyst on which we are working on. This is called metal layered double hydroxide, which has certain advantages for lowering the kinetic barriers for the reaction to occur. Okay, so let's move to the next slide. Okay, so we will show another experiments, which is the nylon synthesis. Okay, so all of you know that nylon, which you can see everywhere, right? On your dresses, on your umbrella, everywhere, right? So this is a polymer. So this polymer was obviously this is a synthetic polymer. It is not there on the earth forever. It was synthesized. Okay. And as far as I know, that DuPont was the first company. They are very famous US company who has developed lot of polymers and very rich company based on North Carolina. So this is their space. They have made a lot of money out of it, and we will just try to demonstrate that how easy it is to synthesize the nylon. That you just mix two chemicals and you can get the nylon. Okay, and then this nylon is basically used, on everyday purpose. Okay. So this is basically just to demonstrate the simple organic chemistry, how it leads to a product. Okay. So I hope all of you can see that there is a first reaction, two molecules which will just mix two solution. Okay. So one is amine, another is acid chloride. Okay. As I am saying that chemistry is okay. Okay. So as we saying that chemistry is mostly about electron donation and electron acceptance. Okay. So that is what happens. So the amine is basically a electron rich molecule. So the nitrogen atom has like excess electrons, right? And then acid chloride, if you see that the carbon center, which is basically a electron deficient center. Okay. So it can donate the electrons to the carbon deficient center and form a amide bond. Okay. So this is there's a this is how at the bottom I'm just trying to show the mechanisms through which it happens. So so basically, in the bottom, we are saying that the amine, which has the excess electron, the two dot means two electron excess is there.
it donates its electron to the acid chloride, and then new bond formation happens, and basically can you just yeah, so it forms this CONH bond, it forms. Okay, so this CONH bond in chemistry we call it amide bond, and it is there, this bond is there everywhere in life. The peptides has this CONH bond. Okay, so as you know, in every living species has the peptides, and this everywhere this bond is there. This CONH bond is there present in the life also. Okay, so this is the reaction between just the amine and the acid chloride leads to this amide bond formation. Okay, this is the chemistry which we can use to synthesize the nylon. Okay. Okay, so can you go to next slide? Yeah, so now in the previous slide, what we have shown is that the molecules which we have taken have only one amine group and one COCl group. Now, if we take a molecule which has both, uh, okay, both has amine group on the two sides and the acid chloride has in the two sides, then what will happen is that the reaction can happen on the two sides instead of the reaction on the one side, right? So everybody is getting it. So in the previous, if you can go to the previous slide. So here we have only one acid chloride in one molecule, one amine group in one molecule, right? So only one reaction can happen between the two. Now we have, what we are doing is that we are taking, now go to the next. Yeah, so now what we are doing, we have taken the molecule where amine group is on the both the end of the molecule and COCl is also on both the side of the molecule. So the reaction can happen on two sides, right? So as a result, what happens as we will move this, add these two chemicals, they will react on both the sides and will grow linearly. Okay, so it's this easy. So what we will see is that when the two chemicals will mix, they are at the interface, it will basically become a linear polymer. Okay, clear? So it is basically a reaction between NH2 group and COCl group. NH2 group is giving the electron and COCl group, which is the electron deficient, is taking the electron and basically forming an amide bond. So in this way, we can grow the chain. Okay, and this is becoming a polymer. Polymer word, where from it is coming, that we have a monomer, and polymer means lot of molecules, right? It's chained by, so it's like, a long chain which we are preparing through this simple reaction. And as a result, then we are getting the nylon, which is basically of a huge tensile strength it has. And we are using these polymers, every day in the life. So as you all know, there are a lot of uses of the polymer. Now, some of the polymers are creating a lot of problems in our life also, because it doesn't decompose so easily. Like the plastic bags, people are trying to get rid of. But in any way, the polymers has a lot of use in our life. And so this is the one experiment which my students will try to demonstrate, that how easily we can grow, synthesize nylon, which is of our daily use. Okay, so that's all I have. So, and then my students will show the demonstration. Okay, thank you. Thank you for your very quick and brief overview about your subject। और हमें बड़ी खुशी है कि सर आपने जिस तरीके से हमें आपकी जर्नी में इतने सारे मॉलिक्यूल्स की यात्रा कराई है, और अब आप डेमोन्स्ट्रेशन की बारी है। तो आपकी जो टीम है, मैं अपनी टीम को बोलूँगा कि कैमरा स्विच करें और डेमोन्स्ट्रेशन मोड हम ऑडियंस देख पाए। और वहाँ पर एक माइक्रोफ़ोन भी है मैम, आप प्लीज़ यूज़ कर सकते हैं और यू कैन कैरी ऑन योर डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू। Hello everyone. They will be demonstrating two experiments. One is the formation of nylon and another one is the hydrogen evolution. So I guess you will be able to see it by camera and we will be demonstrating it here.
हाँ, जैसे कि बोला कि दो एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे. वन इज जेनरेशन ऑफ हाइड्रोजन. कौन सा एक्सपेरिमेंट पहले दिखाओ? HER. Okay. So hydrogen evolution दिखाएंगे. Just they will just dip 2 electrodes in the sulfuric acid solution, and will apply this potential, and this will generate basically the two gases. One will be hydrogen on the cathode and oxygen on the anode. Okay. तो एक बात by the time they prepare बोलना चाहता हूँ कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे और जगदीश चंद्र बोस and their students also initially focused a lot in Indian science. तो उन लोग चाहते थे कि हमारे देश में साइंस को लेके आगे बढ़े और इंडस्ट्री बने. दैट इज व्हाट आई मीन आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे चाहता था. But somehow after the independence we became too much focused on IITs, and started forgetting the science part. And with this actually after a lot of कि independence के बाद IITs आया था, IIM आया था, बट जो नहीं आया था वो था साइंस इंस्टीट्यूशन का प्रीमियर इंस्टीट्यूट. और ले दूर थोड़ा देर में ही सोचा होगा, ठीक है, पर 2006 में गवर्नमेंट को लगा कि जैसे हमारा IIT है, IIM है, ऐसे हमारा साइंस का भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट होना चाहिए. और इसी उम्मीद से बेसिकली हमारे IISER पहले पुणे और कलकत्ता में चालू हुआ था, फिर 7 में मोहाली में चालू हुआ था, एंड देन भोपाल और त्रिवेंद्रम में चालू हुआ था. तो जो बात बोलना चाहता था कि हमने मतलब बेसिक साइंस के ऊपर डेवलप करके प्रोडक्शन के बारे में इंडिपेंडेंस के बाद बेसिकली ज्यादा नहीं सोचा था. सो इसलिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग is very much dependent on we bring all the instruments from United States or France or this way. So this is not a good thing. But hopefully now the things are changing, and this small instrument which we have brought here, this is actually made in Calcutta by a startup company. So things are little bit changing, and obviously the company is run by a chemistry PhD person also. Okay, sir. Okay, so this electrode, this is a graphite electrode, and so this is a graphite electrode they are putting in, and then there is a platinum electrode which is coated with our catalyst. So this platinum is acting as a cathode where the hydrogen evolution will take place as we apply the potential. Okay, so as you can see, there is a in both the electrodes there is a gas evolution is taking place. As I said, कि gas evolution you cannot really identify कि कौन से gas evolve हो रहा है. But on the this electrode there is the evolved gas that's a negative electrode on which the hydrogen evolution is taking place, and on the other electrode we are getting oxygen. Okay, so the idea is that कि हम लोग इस गैस को स्टोर कर सकते हैं. हाइड्रोजन को स्पेशली लोग स्टोर करने का ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज हाइड्रोजन इज सच अ लाइट एलिमेंट दैट इट डजंट as soon as it produces it goes up, right? So we don't have the hydrogen in the environment, so we have to store this hydrogen, and this hydrogen will be carried to in a cylinder to a car or wherever we need, and it can capture the oxygen from the you will have basically a fuel cell which will capture the oxygen from the environment and will react and will produce water. So that is the idea on which this research is going on. So our research is based on to lower the power requirement for this reaction to carry on. Okay. Okay.
Okay, okay. So they are just trying to heat us. Now the temperature has cooled down. So we need to increase the temperature of one of the solution. Then only the nylon formation will happen. Okay. So as we are showing that कि हम लोग दिखाएंगे कि दो liquid को just mix कर देंगे and at the interface the nylon formation will go on. Okay, and they will bring it through the a glass rod that they will show. So we have two solutions. One is the sebacoyl chloride and another is hexamethylene diamine. Okay, so both the compounds have like in one case amine group on the both sides and another one has COCl group on both the sides. So the reactions will take place on the both the end and as a result there will be a linear growth of this molecule and you know like it's basically becoming a polymer. Okay. हाँ, जैसे कि ये फॉर्म होना शुरू करे. First of all, we have taken this diamine, and after that we were adding the equal amount of chloride to it from the walls of the beaker so that a layer is formed in between, because one of the solution is being dissolved in hexane and another one is in water. So these are the two immiscible solids, liquid. So that will form a layer in between. So we will be getting this polymer from this layer. Right now she is adding chloride from the walls and we leave it from, I guess, 30 seconds so that the layer can be formed. Although the layer has started forming. You can सो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे एक थिन लेयर फॉर्म हो रहा है. उस जैसे ये थिन लेयर फॉर्म हो जाएगा उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप हम लोग चेक करेंगे कि ये नायलॉन फॉर्मेशन हुआ है या नहीं. तो लेट्स लीव इट फॉर 1 minute ओनली. So as you can see here, it is becoming turbid and right. Yeah, at the interface it's forming. हाँ, okay. So, so at the interface it will start forming. So that as you know कि chemistry में reactions होने में थोड़ा time लगता है. But compared to many other reaction ये काफी जल्दी होता है. I mean our reactions goes on for like for a very very long time. But compared to that, this is actually much more like So as you can see that the polymer started forming, and as they will rotate, you can see that the nylon is forming. Okay, so this is a very easy experiment, and like I tried to explain कि कैसे ये form हो रहा है. That is much more important.
So as you can see, I mean, nylon formation is very easy and it's very quick reaction. Okay. और बेसिकली इसका इसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है बिकॉज एज यू नो पॉलीमर का स्ट्रेंथ बहुत ये होता है कि linearly it's growing a lot, right? I mean its molecular mass is huge compared to a monomer, तो इसलिए इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होता है. हाँ हाँ, सो बेसिकली ये रिएक्शंस होने में थोड़ा मतलब यू नो एट लिटिल बिट ऑफ हायर टेम्परेचर वो ज्यादा बेहतर होता है. सो बेसिकली द ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन एज केमिस्ट्री में क्या होता है कि एवरी रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर ऑल्सो. So this is called kinetics that you know we have famous equations. तो अभी थोड़ा टेम्परेचर कम है इस रूम में तो which is basically slowing down the reaction. So that is why they were initially trying to heat the solution so that like you know we don't face too much problem. But if we have like higher temperature, this will grow actually much more faster and with much more easily with the polymer size will be slightly bigger also. Okay, so as you can see that we have grown a lot of nylon right on the stage within few minutes. And yeah, you come and show on the front. सो ये नायलॉन है जो हम लोगों ने सेबिकॉइल क्लोराइड और डायामीन यूज करके बनाया है वाया कंडेंसेशन रिएक्शन. एंड वी कैन ड्राई इट. हम लोग इसको रख सकते हैं, ड्राई हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको फिर से देखेंगे तो ये प्रॉपर वाइट कलर का नायलॉन मिलेगा हमें को. Okay, तो अब किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, आई थिंक अकॉर्डिंग टू आवर प्लान the last part is answering questions. Okay, so if you have any, yeah. हाँ. हम्म. हाँ. हाँ. अच्छा अच्छा. उनको माइक दो. ओके ओके, मैं मुझे पता नहीं था. थैंक यू. थैंक यू. मैं बोल देता हूँ. ये उन्होंने बोला है कि सेम टाइम में न्यूयॉर्क में भी ये डेवलप हुआ था एंड लंदन में डेवलप हुआ था. तो न्यूयॉर्क इज NY एंड लंदन का LON लेके नाइलॉन है. और फ्रॉम द केमिस्ट्री साइड लाइक यू नो ये जो चेन देख रहे हो CH2 का, there are like you can have different combinations like 6 10 6 6 like that. Depending on the number of carbons it will be of different size. Okay. Myself Anjali Soni from Maharshi Vidya Mandir, class 12th, and I'm asking the question that did the whole solution नहीं turn into a polymer? नहीं, Polymer. गुड क्वेश्चन. कुछ कुछ चीज लाइक यू नो नहीं बोला था. हमने सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बारे में ही बोला, बट मॉलिक्यूल्स को हमने कुछ सॉल्वेंट्स में लिया, राइट? 2 सॉल्वेंट्स में लिया गया. तो सॉल्वेंट जो है व्हिच इज बेसिकली हेल्पिंग द मॉलिक्यूल्स टू कम क्लोजर. तो सॉल्वेंट का कोई चेंज नहीं हो रहा है. ओके, ओनली दिस 2 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग द पॉलीमर, राइट? तो यू कैन सी द लिक्विड्स आर स्टिल देयर. Okay. Okay, liquids means solvent is there because they don't change, right? So the only thing is that solvent is क्या है, water and ये hexane. So one is aqueous, another is so organic solvent बोलते हैं, and they are immiscible. On their interface it is forming.
तो सॉल्वेंट का कोई चेंज नहीं हो रहा है। Good morning, sir. Yeah. Good morning, sir. My name is Dhruv from DM School Bhopal, and my question is, ये जो नायलॉन हमने क्रिएट किया है, ये बायोडिग्रेडेबल है या नहीं? Biodegradable, I don't think इसको process, I think most of the polymers are not easily degradable, and nylon का melting point I think बहुत high है, so that's a good question, but I don't, I mean, in my understanding, most of the polymers are not easily biodegradable, but there are researches going on to, like, recycle the plastics or all these things. So specifically for nylon, that's a good question. I have to check it. Okay, but usually the polymers are not like, convertible to like useful something so easily, because इसका the chemistry के understanding से बोल सकता हूँ कि इसका chain इतना लंबा है, राइट। सो कोई भी पॉलीमर इतना आसानी से हम कन्वर्ट कर नहीं पाते हैं, और जिस वजह से बेसिकली एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स आ रहा है। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन इज कि आपने सॉल्यूशन को हीट किया, तो आपने डायमीन को हीट किया या फिर सेबेकॉइल क्लोराइड को? सेबेकाइल क्लोराइड। सेबेकॉइल क्लोराइड। हाँ, सो हीटिंग इज बेसिकली लाइक क्या होता है कि यू आर इन व्हिच क्लास? सर 12th। तो तुमने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा है ना? या पढ़ा नहीं केमिस्ट्री में? देयर इज अ इक्वेशन व्हिच रिलेट्स द कोई भी रिएक्शन जो चल रहा है, रिएक्शन बहुत आसान भाषा में, रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोजर। ओके, तो यूजुअली क्या होगा कि तो मतलब इन अ लेमैन लैंग्वेज आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मॉलिक्यूल्स के कॉलिशन जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना आसान हो जाता है, राइट? तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस becomes faster at higher temperature little bit, okay, and this is called Arrhenius equation, which correlates rate constant with temperature. Okay, so usually वो ये होता है कि हमारे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाने से रिएक्शंस फास्टर होता है। सवाल भी इतने अच्छे सेशन के बाद मुझे लग रहा है कि सवालों की तो झड़ी लगना चाहिए, परंतु कुछ सवाल इंतजार करते हैं पकने के लिए। धीरे से वो आइडियाज जब जाएंगे आप वाइब्रेशंस के साथ, रोड से, घर पे, गाड़ी से, आई थिंक दो ऑर्गेनिक प्रोसेस है। Questioning is very critical part of any endeavor, especially in the field of science and technology. It matters a lot. The way we expose ourselves, observe more and more the outer world, it becomes necessary कि हम उसको समझते कैसे हैं। स्कूल किस लिए जाते हैं हम? किस लिए जाते हैं? फॉर स्टडी। स्टडी के अलावा हमें समझने भी जाना है। Yes, that's great. So on this note, for this wonderful demonstration by Dr. Paul's team, Parul and Sweetie, under the full guidance and support, and that he is actually the whole soul torchbearer of this whole initiative. So thank you, Professor Paul, and आपकी team, और especially Department of Chemistry, IISER Bhopal, for always joining Regional Science Center Bhopal's initiative. On this note, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दाल जोरदार तालियों के साथ। तालियों में कंजूसी नहीं होना चाहिए, पता चले कि हम हमारी टीम के लिए थैंक यू सो मच। और सर आखिरी में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, ऑडियंस वर्चुअली भी हमारी भारत में हमारी कई साइंस सेंटर्स की फेसबुक पेज से भी आपको देख रही है। हाँ, सो मैं जिस बात को ऊपर ज्यादा एम्फसाइज बिगिनिंग में किया था कि मेरे जो एक्सपीरियंस है, एज वी आर शोइंग द, कैन यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड कि पहले का स्लाइड दिखाओ। हाँ, उसके पीछे स्लाइड पे जाओ। हाँ, तो ये जो रिएक्शंस हम दिखा रहे हैं, बेसिकली केमिस्ट्री मेरे अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाना आने का ही मेनली खेल होता है। ओके, तो केमिस्ट्री से डरना ज्यादा कुछ नहीं है। एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देता है और एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है। यही, आई मीन देयर आर सम अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस आल्सो, बट दिस इज द मेन थिंग। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समथिंग जो फियर क्रिएट करता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समझने के लिए फर्स्ट थिंग यू लर्न कि कैसे
HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, डिफरेंट जो सल्फर का नाइट्रिक एसिड ये सब होता है, राइट, किसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट। सो नाइट्रोजन हैज लाइक फ्रॉम +5 to -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो पहला चीज केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करना सीखो। ओके, और उसके बाद बेसिकली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का कैसे ये हो रहा है, हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन। एंड बेसिकली एज आई सेड कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोस्टली अबाउट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक में भी वही है। तो हम अगर माइल्ड कंडीशन देते हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा चेंज नहीं होगा। हम अगर लाइक यू नो बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाएगा, राइट। एंड पीरियोडिक टेबल को थोड़ा समझना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में जैसे कि ऊपर के एलिमेंट्स होगा नाइट्रोजन, आई मीन द फर्स्ट रो एलिमेंट्स, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना फेंक ऐड करना बहुत टफ होगा। और जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल के नीचे आ जाएंगे द एटम साइज इज बिकमिंग बिगर, राइट। सो फॉर एग्जांपल इफ आई कंपेयर लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, सेम कंडीशन में नाइट्रोजन में जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाएंगे उससे ज्यादा फास्फोरस में कर पाएंगे। Okay, so based on this simple few understanding, you can actually start predicting how the inorganic chemistry will be, reactions will be happening, and just start guessing it, right? Instead of just initially looking at the book, what is the product is forming, but start guessing it. Even if you are wrong, then try to understand why I am wrong. Okay, so this will help in understanding the reactions very easy. Okay, thank you. थैंक यू सर वंस अगेन। आपके इसने प्रभावी व्याख्यान के बाद और इतना अच्छा प्रदर्शन, बिकॉज विज्ञान बहुत ज्यादा बिलीव करती है प्रयोगों में। प्रयोग होना साइंटिफिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो प्रयोगशालाएं स्कूलों की, वो जरा खंगाल डालना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट छोड़ना नहीं है जब तक कि वो हमारे असाइनमेंट का हिस्सा है। इस चक्कर में उसको छोड़ना नहीं है कि अगर नहीं है हमारे असाइनमेंट का तो देखना भी नहीं है। नहीं, सब चीजें देखो, चलाओ, एक्सप्लोर करो, आखिर वो है क्यों। केमिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, इस तरीके के मिलाना पड़ता। पूछ लो, कुछ कुछ डेंजरस भी एनिमल्स तो होते ही हैं, केमिकल्स भी होते हैं। बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग सम वेरी हार्मफुल केमिकल्स। उसके लिए प्रिकॉशंस हैं, उनको जरूर फॉलो करें। एंड वी स्ट्रांगली बिलीव विज्ञान केंद्र जितने भी हैं भारत में हमारी काउंसिल के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लर्निंग बाय डूइंग, यानी आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे चाहे वो साइंस की प्रोसेस हो, प्रयोग हो, या आपकी कोई भी लर्निंग आउटकम्स का हिस्सा बनना हो। इसी बात पे आपको एक बार फिर से आपके सभी शिक्षकों को, आपके स्कूल्स को, और कुछ शिक्षक यहाँ पे हमेशा साइंस सेंटर से जुड़े हुए खुश चेहरे, खुशमिजाज चेहरे दिखते रहते हैं। वो बताते हैं कि रे ऑफ होप जो है, और ये जो हम रसायन विज्ञान की किरण है, ये जारी रहेगी बच्चों में इंस्पायर करने के लिए। संस्कार वैली भी है हमारे बीच में, जवाहर स्कूल भी है, नवोदय स्कूल भी है, और भी स्कूल है। आप कौन सा स्कूल है मैम? डीएम स्कूल है, बड़ा साइंस सेंटर आते रहते हैं। और सी इज अ वेरी प्राउड टीचर। वो अपने पास आउट स्टूडेंट्स भी जहाँ पे जाते हैं तो मैम ऑलवेज इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग फिगर। आप सबको, और मैं आप दोनों को, पारुल जी और स्वीटी जी, एक बार फिर से, और जो भी ऑडियंस हमें देख रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, सबसे कहेंगे, जो कि आज एक रिवाज बन चुका है पूरी समाज का, कि आप जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्योंकि डिजिटल इस वर्ल्ड में हम आपसे कैसे पहुंचेंगे। आप दूर दराज इस प्लैनेट के किसी भी हिस्से में हैं, तब भी आप हमें जुड़ सकते हैं और अपनी सुझाव भी हमें दे सकते हैं। हमारे एनसीएसएम के हेडक्वार्टर पेजेस पे या साइंस सेंटर की जिस भी पेज से आप देख रहे हैं, आप जरूर उन्हें भी फॉलो सब्सक्राइब करें, ताकि विज्ञान सिर्फ 4 दीवारों में कैद न रहे, ये सब तक पहुंचे। इसी बात पे एक बार फिर से आपसे शुभकामनाएं देते हुए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।